7.2, aft 7.8. (1,600 tons of cargo was loaded. So W is plus 1,600 tons. Plus is representing loading. The minus would represent discharge. 1,600 tons was cargo of cargo was loaded in two locations. 1,600 tons of cargo was loaded in number 2 hold. W1, number 2 lower hold. HG 30 forward. And 1,400 tons, W2 is 1,400 tons, the second parcel. And the second parcel of 1,400 was loaded HG 55 aft. And the drafts then were found to be, that means the final drafts. The final drafts forward were 7.8 and 10.4. Find HF. Okay. So you make a scale. This is forward. This is aft. This is H, which is L by 2. That is 65 meter mark. Position of center of rotation is unknown to us. So I can take it anywhere that I want. So I'm taking it here. F. Let HF is equal to X meters forward. ये मैंने X डाल दिया. I can take it aft also if I want. No compulsion. You can take forward, you can take aft. No issues. W1 is loaded 30 forward. So this is G1. This is W1. And this is 30 forward. And W2 is loaded 55 aft. This is W2. This is 55 aft. Okay. So we start with the trim first. Initial trim is how much? 0.6 meter by stun. Correct. Absolutely right. How much is the final trim? How much is the final trim? Sir, 2.6 meter by stun. So what is the TC or the trim cost or the total change in trim? 2 meter by stun. 2 meter by stun. Correct. Convert this to centimeter. But I know TC is equal to trimming moment upon MCTC. Therefore, find out the trimming moment. 35,000. What are the units? Tons meter. And this trimming moment will be by what? Stun, sir. Why? Why will it be by stern? TC by stun. Because TC is by stern. Absolutely right. Because जो TC का है वो वही trimming moment है. TC is a result of the trimming moment. Is a resultant of that. यहां तक कोई डाउट? सर जो हमने टीसी निकाला इसके साथ मीन राइज का कोई इफेक्ट नहीं होगा सर?
होगा, टीसी के साथ कोई नहीं होगा, Mean sinkage. मीन सिंकेज के साथ में टीसी का कोई नहीं होगा. टीसी इज लॉन्जिट्यूडनल स्टेबिलिटी एंड मीन सिंकेज इज ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी, वर्टिकल. तो ये तो मैंने लॉन्जिट्यूडनल को हैंडल कर लिया. अब मैं मीन सिंकेज पे आ रहा हूं. मीन सिंकेज is equal to W upon TPC. How much is the W? 3,000. 3,000, correct? Absolutely right. 3,000 tons is the W. And TPC is how much? Is not given to me. I don't need it. Is not given to me. Why? Because I am talking about longitudinal stability. So in longitudinal stability, I'm not going to talk about mean sinkage because mean sinkage is going to be used when I don't have any one of the final drafts. But in this case, मेरे पास दोनों ड्राफ्ट दिए हुए हैं, तो मुझे कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं मीन सिंकेज में क्यों उस दिशा में क्यों जाऊं? Have you understood? So I don't need to go in that direction. Instead, I find out the trimming moment. Trimming moment table. Weights loaded. सबसे उससे पहले remarks. Weights loaded. Lever. Lever is nothing but GF. Trimming moment. Head. Stern. Number 2 lower hold. 1600 tons loaded. इसका लीवर क्या होगा? 30 - x सर. करेक्ट. और इसकी जो ट्रिमिंग मोमेंट है वो बाय हेड होगी. 1600 into 30 - x. Stern will be nil. ये समझ में आ गया? सर ये स्टेप काफी फास्ट हो गया सर, पता नहीं लगा. हाँ, अब समझना है. ट्रिमिंग मोमेंट का टेबल. नंबर 2 लोअर होल्ड 1600 टन लोड किया. लीवर, डेफिनेशन ऑफ लीवर GF, G to F. 30 - x will be GF. So ये लीवर हो गया. W into D, 1600 into 30 - x will give me a head trimming moment. मेरा बाव नीचे जाएगा, ये हेड में गया. Stern nil. Is that okay? Is that okay? Yes sir. Number 5 lower hold 1400. इसका लीवर क्या होगा? 55 + x सर. करेक्ट. इसको कहां लिखूं? स्टर्न में सर. स्टर्न में. So head will be nil. इसको स्टर्न में लिखा. Crucial stage of the question. Final trimming moment. क्या लिखूं? So stern trimming moment minus head trimming moment equals to 35,000 tons meter. Correct. Because this is stern, so my resultant over here should be stern. That can only happen if I do stern minus head. So final trimming moment will be stern minus head. ये समझ में आया? Is this okay with everyone? And this whole equation is equal to 55,000. Oh, sorry, 35,000 by stern. Solve for x. And tell me the So 2 value. meters. Positive or negative?
So positive. Positive 2 meters. Therefore, HF is equal to 2 meters forward. पॉजिटिव का मतलब है जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम करी थी वो आंसर सही आया है. सपोजिंग आई हैड गॉट x इक्वल्स टू -2. इसका मतलब क्या है? देयरफॉर HF विल बी ऑपोजिट ऑफ व्हाटएवर आई हैव एज्यूम्ड 2 meters आफ्ट. ये इसका मतलब है. ये समझ में आया पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर? Yes, sir. सर एक बार फिर से क्लियर कर देना सर. सी हमारा आंसर आया पॉजिटिव 2. इसका मतलब है जो मैंने assumption करी थी वो सही है. That means HF is 2 meters forward. But supposing my answer had come x equals to -2, तो वो भी पॉसिबल है. तो फिर इसका क्या मतलब है? जो डायरेक्शन मैंने ओरिजिनल चूज करी थी एज्यूम करके, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि आंसर क्या था, वो ऑपोजिट है इसका. इसका मतलब है HF is 2 meters aft, opposite of whatever I had assumed. Okay, sir. Any doubts in this question? No, sir. Okay. सर अगर हमने इसी क्वेश्चन में आफ्ट ली होती और अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती देन दैट तो मींस फिर हमारा that means the correct value is 2 meters aft. But इस क्वेश्चन में अगर मैं aft लेता तो हमारा आंसर -2 आता. इस क्वेश्चन में अगर मैंने aft assume किया होता तो हमारा आंसर -2 आता. उसका क्या मतलब है? दैट मींस 2 मीटर फॉरवर्ड. Correct, absolutely right. Opposite of the assumption. ठीक है, is that okay? सर मतलब हमने जहाँ भी एज्यूम किया है और अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब करेक्ट एज्यूम किया है. Correct, बिल्कुल सही. ओके सर. Any other questions? Any other doubts in this question? Okay. Going on to question number 15. Question number 15 to 20 are the toughest questions in this exercise. And they will now start with the summary of जितने भी अभी तक हमने principles learn करे हैं वो सबको अब use करेंगे एक एक question में. So 15 to 20 are the tricky questions, beginning with now 15. So you'll have to be a little careful when you're handling 15. Length is 124 meters. MCTC is 180. TPC is 27. HF 2.5 aft. Forward draft 5.8. Aft draft 6.9. How many tons of salt water must be ballasted? How many tons must be ballasted into 4-peak tank whose HG is 58 forward in order to reduce the aft draft to 6.7 meters? Final draft aft should be 6.7 meters. Also state the final draft forward. Okay, I want you to try this question on your own. First, try it on your own. I'm giving you 5 minutes.
How many of you have proceeded exactly like this? Any of you have proceeded like this? सर कोशिश तो ये की थी सर ट्रिमिंग मोमेंट निकालने की, बट वो उस हिसाब से निकला नहीं सर। सी ट्रिमिंग मोमेंट इसमें मिलेगा नहीं, तो आपको ये वाला टेबल वाला फॉर्मूला, जब भी आपको इनिशियल ड्राफ्ट दिए हुए हैं और फाइनल का कोई भी एक ड्राफ्ट दिया हुआ है, इसका मतलब है आपने ड्राफ्ट का टेबल बनाना है। ये आपके लिए हिंट है, ये आपका गोल्डन रूल है। और उस एक साइड से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो वो इक्वेशन बना दो और फिर दोनों साइड्स के यूनिट्स को इक्वल कर दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और इक्वेट कर दो। इज दैट ओके? ओके सर। डब्ल्यू कितना आया? Sir, 160.95 tons. 160 point. Can you repeat that? 995, sir. 0.95. हाँ जी, एनी डाउट्स? Any doubts, anybody? Anybody, any doubt in this question? No sir. All is okay? सर जब हमारा ट्रिम कॉस्ट आया था तो हाँ। उसका सर हम सीधा ट्रिमिंग मोमेंट बाय एमसीडीसी करके इक्वेट क्यों नहीं कर सकते सर? ट्रिमिंग मोमेंट बाय एमसीटीसी करके क्यों नहीं कर सकते? क्या कोई इसका कोई जवाब देगा भाई? सर क्वेश्चन क्या इसमें था? हमारे पास ट्रिम कॉस्ट है थोड़ी, इसमें सिंकेज और ट्रिम आफ्ट और फॉरवर्ड दोनों फैक्टर लगेंगे ना। ट्रिम कॉस्ट तो दोनों को मिला के बनेगा और दोनों ही हमें नहीं गिवन है। तो सिंपल लॉजिक है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग। हमें ट्रिम कॉस्ट तो पता ही नहीं है, कैसे निकालोगे? ट्रिम कॉस्ट कैसे निकालोगे? सर हमको आफ्टर वाली ट्रिम फाइनल में दी हुई सर 6.7 और 6.9, उनके डिफरेंस में सर ट्रिम कॉस्ट पता लग जाएगी। पता लगा के बताओ। डब्ल्यू पता है तुम्हें सिंकेज के लिए? नहीं सर। तो फिर अगर तुम्हारे पास डब्ल्यू ही नहीं पता तो सिंकेज कैसे पता? और सिंकेज नहीं पता तो फिर कैसे निकालोगे? टीसी इज कनेक्टेड टू टी, आई एग्री, बट देयर इज अ सिंकेज इन्वॉल्वड आल्सो ना, वो एक्स है। समझ में आया? सर जो ये ड्राफ्ट गिवन है फॉरवर्ड एंड हाफ,
ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है ना सर? ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है। ये भगवान, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट क्या डेफिनेशन होती है? तो ड्राफ्ट एट सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सर क्योंकि पीछे हमने एक क्वेश्चन में ऐसे किया था जिसमें फॉरवर्ड ड्राफ्ट और एक हाफ ड्राफ्ट दे रखा था जो कि इवन कील पे था, तो हमने फॉरवर्ड वालों का हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल के और उन दोनों को आपस में माइनस किया, उससे टीसी निकाला था। भाई इसमें फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड दिया हुआ है तुम्हें, अगर निकाल सकते हो तो निकाल के मुझे दिखा दो। नो सर। तो फिर इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड ड्राफ्ट नहीं दिया हुआ है तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कैसे निकालोगे? Have you got Sir, it? final forward draft Yes, sir. 6.141 meter. How much? 6.141 meter. 6.141 meter. This is the final answer. Any other doubt in this? No, sir. Okay, all right. Sir, if we have given the final drafts and we have asked for the initial drafts, then only this sign will get opposite now. See that again. Sir, if in the question we have final drafts and they have asked the initial drafts, so only the sign of the sinkage and trim forward and trim aft, trim correction forward and aft will get opposed. Correct, that is right. But there will never be a question like that. There will never be a situation where you don't know your initial drafts. But you're answering it correctly. Signs will be opposite. लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि इनिशियल ड्राफ्ट ना दिया हो. इनिशियल ड्राफ्ट हमेशा दिया होगा, फॉरवर्ड फाइनल ड्राफ्ट कोई भी एक या दोनों ढूंढना होगा. क्वेश्चन ऐसा होता है. Is that okay? Yes, sir. Thank you, sir. Question number 17. Initial draft, forward 7 meters, aft 10 meters, HF 0. Notice no length given. MCTC 220, TPC 25. The maximum draft to dock cross a bar at the dock entrance is 9 meters. So final draft aft is 9 meters. Due to a damaged forepeak, the final draft forward not to exceed 7 meters. So final forward draft 7 meters. This is your final draft.
Find the minimum amount of cargo to discharge. So this is a question of discharging. From number two locations. Number 2 to Indic. HG30 forward. $50 aft. Minus rise. TF, TA. Now the sign of that, how do I decide? सर पहले तो सर ये क्वेश्चन में ये बात समझ नहीं आई सर। परमिसिबल उन्होंने बोला 9 मीटर एंट्रेंस के लिए है। हाँ। फिर फाइनल आफ्टर ड्राफ्ट हम 9 मीटर ले लेंगे। That's right. Basically ये शिप आया with 7 and 10 और एंकरेज पे आके वेट किया। अब एंकरेज पे बार्जेस आएंगी और इसके लॉन्ग साइड जाएंगी और ये पार्ट डिस्चार्ज करेगा बार्जेस में, और जब इसके ड्राफ्ट्स 7 and 9 हो जाएंगे तब ये अंदर लॉन्ग साइड जाएगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सो इट मींस सर हमको पहले आफ्ट में 1 मीटर ड्राफ्ट की जो रिडक्शन हुई है वो कार्गो फाइंड करना है। करेक्ट। Sir, TF will be positive and TA will be negative. कैसे पता चला? Sir, initial trim और final trim से trimming movement निकाल के। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक। इनिशियल ट्रिम 3 meters, stern, final trim. Therefore, TC is how much? Sir, 1 meter by head. Does everybody agree on this? Yes, sir. If TC is by head, then this will be TF. Is equal to trimming moment upon MCTC. Trimming moment. By head.
What is W? सर ये आप स्टेप दोबारा बता सकते हैं प्लीज? कौन सा वाला स्टेप? सर जब आपने लिखा 10 माइनस डब्ल्यू अपॉन टीपीसी, ये वाला, ये जो ब्लॉक है, इससे मैंने इक्वेशन बनाई है. So 10 minus the rise minus the TA is equal to 9. Is this okay? ओके ओके. So what is rise equal to? W upon TPC. So लिख दो. What is TA equal to? TC into LCF upon LCF. Okay. How much is W? Sir, 1250. सबका सेम आ रहा है. Now let X go here. So this will be. Now you make the turning moment equation and equate it with this turning moment. Is that okay? Yes, sir. So you can do this question at home. सर अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को फाइनल में ऐसे बोल देता कि 9 मीटर एट एन इवन कील, तो मेरे तो को अगर 9 मीटर तो सेम है, तो ये भी 9 होता, ये भी 9 होता. इवन कील का मतलब है ट्रिम 0. Is that okay? तो उस केस में मैं कंसीडर कर सकता हूँ जो मेरा टीसी होगा वो 3 मीटर ही होगा. तो TC will be how much? 3 meter by what? TC will be 3 meter by what? Initial trim 3 meters turn. Final Yes, sir. trim 0. So TC is how much? 3 मीटर बाय टन. अरे बाप रे. नो. बाव कैसे जा रहा है? बाव कैसे जा रहा है? बाय हेड सर. तो फिर तो TC will be by head. अगर बाव ऊपर जा रहा है तो TC is by stern. शुरू में कराया तो था, इतने सारे एग्जांपल दिए थे मैंने फर्स्ट लेक्चर में. यस सर. सर बीच में क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें कि हम मेन ड्राफ्ट निकालते हैं इनिशियल और फॉरवर्ड का, और उससे फिर जो हमारा मेन ड्राफ्ट दे रखा है लास्ट में जैसे 9 मीटर उसमें से माइनस करेंगे तब टीसी आ जाएगा. उस तरीके से भी कर सकते हैं. कुछ नहीं, बस यही करना है भैया. कोई वेरिएशन मुझे नहीं चाहिए. क्यों गोल गोल घूम रहे हो? सिंपल है रास्ता इसका. मैं और कोई तरीका नहीं बता रहा. Just follow this methodology. Don't change this thing. So you want to try out experiments, you can go ahead. There's no problem. Keep trying out experiments. You will be try till you succeed. I'm telling you the easier method. Sir, answer is 506.3 tons and 743.75. 506 point. 3 tons Okay. and 743.75 tons. Okay. This is the answer. Okay. All right. You can take questions for homework now. Please do question number 11, 12. No, 11 we have done already. Sorry. Please do question number even numbers. So 10, 12, 13, 14, and 16.